Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is your favorite show, Daily Calls, the show that addresses all your stock-related queries. In case you're watching this show for the first time, well, this is where over the next 50 minutes, we will guide you through all your stock-related queries. Stock market experts will be joining in and you can send your questions on the stock portfolio that you have, any of the stocks that are coming up fresh on your radar as well. The WhatsApp number is flashing on your screens. Don't forget to mention your name, your location and your contact details when you send us the questions so that we can also dial you back and have you an opportunity to speak to the top market experts to get a custom-made advice for yourself as well. You also are watching this show live on our YouTube platform, so use the comment section there to send in your questions so that we can pick up some of those questions from there as well to address it with our top market experts. Let's quickly first look at how the markets are taking shape before we introduce to you our guest of the day and take up the rest of the queries as well. We are looking at the mild profit taking that's taking place. Remember, we opened up higher, but those gains have been fizzled out right in the half-time trade. 24,185 right now. Remember, we had gone past 24,300 also at one point. 52,121 right now for the Nifty Bank as well. That's only a 1/10% higher move for both the Nifty and the Nifty Bank right now. Where is the profit booking really coming in from? Well, among the sectors, it's the autos that are driving in the slowest lane. 1% lower for the auto index today. Pharma is down by 0.8%. Infra, oil and gas is seeing profits being taken off. Yesterday it was in thick momentum. Even the banks that are the heavyweight banks are exerting some pressure on the downside. So the private sector banks are down, financial services are also down, and consumer durables are also taking at looking at some hit being seen on this level as well. Let's look at the top losers on the markets, especially on the Nifty. It's the Adani twins. Remember, there are newer developments that are coming in and newer concerns coming in, and therefore the Adani Enterprises and Adani Ports both are down by nearly 3% in trade. You also have Bajaj Auto, Ultratech Cement, M&M, Eicher Motors. So some of those auto names definitely which are on the back foot. We are now joined by our top market expert on the show. So let me introduce our guest, Jatin Geria, technical research analyst at Sher Khan is now joining in. Warm welcome to you, Jatin. Good to have you with us. Tell us, how are you looking at this profit booking of sorts after 2 days of consecutive run-up? In fact, the Nifty had gained about 1,000 points in just the last 2 days, and now we are finally seeing some signs of profit taking. So is the rally, that we have seen fizzling out somehow? How are you really looking at the setup? Good afternoon, everyone. So, as far as our Sher Khan research team view is concerned, we believe that this is a minor pause or a brief pause. We can say after a sharp run up, this consolidation is generally happening or is happening after a sharp run up of around, say, around 800 to 900 point kind of an up move. So, some cool off or some consolidation is very much likely over the next couple of trading sessions. However, what we believe is that once this consolidation phase is complete, we are likely to see the next move upwards towards 24,770 to 24,800. So this minor consolidation is only a brief pause in the overall uptrend. The undertone remains bullish, and on the upside, we are expecting levels of 24,770 to 24,800 on the upside. Okay, got that. We'll welcome all our viewers also at this stage who are joining in with their questions. We have Swati, Gunjan, Peter, Raj, Ankur Modi, all of them lining up with their questions. A warm welcome to all of you and good to see you right at the beginning of the show with your questions right there. So let's start off without wasting any time. Jatin, some of those questions that are coming in from our viewers. Swati wants to know on ITC at 485, can she hold or average at the current levels? She's already bought this at 485 levels. Today, FMCG stocks did show us some bounce. Do you think that could be sustained? And especially for ITC, what would your view be? Yeah, so in the case of ITC, apart from the FMCG portfolio level, I think the other thing that is contributing to ITC is the hotel space. So I believe that there is a dual play at in ITC, and we are expecting levels of around 495 to 500 on the upside. So yes, she should continue to hold. I suggest a stop loss level that is 460. 460 should be the stop loss. And on the upside, we are expecting levels of 500 in the case of ITC. So she should continue to hold.
Okay, got that. Continue to hold is what the advice is coming in for you. We also have a caller with us. Hemlata from Chennai is now with us on the phone line. Hi, Hemlata. How are you doing? Yes, can you hear me? Please go on with your question. I wanted to ask if I am holding Adani stock, Adani Enterprises in 10 numbers and Adani Green in 5 numbers. Okay, I Adani wanted to ask, Enterprises is what you have. Okay, what else apart from Adani Enterprises within the group? and Adani Green I have in 5 Okay, numbers. okay, Given the fine. prices going low now, I wanted to ask if I can average it out. Sure. We'll get you your view. Jatin rightly asked, there are several investors who have Adani stocks at higher levels, and now they are seeing this sharp correction again coming in the wake of fresh concerns with the way of US indictment for Adani, Gautam Adani, and some of his fellow officials are concerned. There are bribery charges. Now we are seeing every day some new development happening. There are states like Andhra Pradesh which are actually looking at remulling whether they should go ahead with the contract that has been awarded to Adani Group or not. There are partners, French partners, which are now talking about stopping any fresh investments in the group as well. Of course, the legal proceedings will continue in the US with respect to this. And again, after a days of sharp surge that we saw yesterday across the Adani board, we are seeing again another day of pause, an extended fall for stocks like Adani Green, where also she holds a position. Adani Enterprises and Adani Green. How would you address these two? In the case of Adani Group stocks, we have clearly not suggested to go long anytime in the recent past, and also post this news flow. What we are suggesting is that I think there are better opportunities placed in the market, and if someone is stuck in the Adani positions, then whatever pullback the stock provides, then that should be used as an opportunity to exit their positions. So that is our clear stand. The reason being is that the news flow will keep on coming, I think, for some time ahead. So I believe that if traders are stuck, then the pullbacks that we have seen in the last couple of trading sessions should be used as an exiting opportunity rather than start averaging or building new positions. So in the case of Adani, we got a pullback till 2300, so that could have been used. Even now, if someone is holding, then I suggest to exit the position. Okay, got that. So exit the position is the advice that's coming to you, Himlata, and do not enter afresh. Do not put in any fresh money at this current level as well. There are uncertain times that are to follow. This will only lock your money right here. Better to look at some of the other opportunities in the markets where you can get a clarity and better prospects of making money. So at this point in time, Jatin feels no fresh addition, as well as in case you can exit your position, look at some of the brighter prospects that we will be discussing. Okay, anything, Jatin, that you would like to highlight instead of Adani to Hemlata and to all the investors right there, if they want to make the switch, where can they safely make this switch? If someone wants to make a switch, then we believe that IT sector is one sector. Yeah. I know it's not related. It's not related sector, but I think if someone wants to park money, then I think IT is providing a good opportunity, and the frontline IT stocks like HCL Tech, TCS are providing good opportunities where they can switch. Okay, got it. Let's take the next question. This is from Gunjan. She wants a view on two stocks. IRB Infra she holds at 52 levels and SJVN she holds at 115. Where can she continue to hold? Where should she exit? And at what level? IRB Infra and SJVN. One is from the infra space and one is from the renewable energy space. How would you look at these two stocks, Jate? Yeah, so both these stocks are providing an pullback after a deep correction. So I believe that there is a scope for SJVN to rise up to 120 levels. So I think 120 around 120 levels is a good level to exit the position in the case of SJVN, and in the case of IRB, I'm expecting a pullback towards 57 to 58 odd levels. So 57, 58 is a good level to exit
in the case of IRB. Okay, got it. And for Suslon, you're saying 115 is her purchase price for, no, not Suslon, sorry, for SJVN? For Yeah, for SJVN, what have you SJVN, pointed out? so for SJVN, I'm expecting a level of 120 on the upside. So Okay, around 7 that's rupees from current market price. okay, got it. So I hope Gunjan, both the levels have been suggested to you right here. Please move according to the advice that's been shared. We have a caller with us now from Nellore City. Siva Prasad is with us on the phone line. Hi Siva Prasad, how are you? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Tell me, what's Ma'am, your I'm question? holding to JSW Holdings. Okay. Is the present targeted, ma'am? Okay, you want to know the target price. What is the price at Yes, which you ma'am. are holding on? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is your purchase price? 9 shares, ma'am. 9 shares. Okay. Actually, JSW as for 14,000, ma'am. Actually, 14,000. Okay. So it's definitely you are in profits right now. On JSW Holdings, we actually saw about 2 weeks back that there was consecutive, moves over 3-4 odd sessions. In fact, the stock had moved up about 60-70% odd in a very short, brief period of time also, Jatin. Now, how are you looking at JSW Holdings after the recent run-up has taken place? Is it advisable to book profits? Should one stay on? And what is the target that you could be advising here? See, I would suggest keep a trailing stop loss of 14,500 and hold on to the position. The trend is still positive. What we are seeing is that a retracement of the previous rally, which happened between 9,000 to around 19,000. So I think that retracement level comes to around 14,500. So if 14,500 breaks, then I think he should exit the position. And on the upside, if the rally resumes, then there is a possibility that the stock can run up till 18,200. So 18,200 is the target area. If he's holding, then 14,500 should be the trailing stop loss. Okay, got that. Definitely. This is the view that's coming in for you. Let's take the next question now. This is from Peter Raj. He's from Trichy. He wants to know if he can enter afresh in Genesis International for the long term. Interesting question right there. And I know where is it coming from, Peter. Genesis International stock actually rallied yesterday in trade. Today it's absolutely flat. And this is the stock which has actually got a sharp upside target from Elara Capital. So if we look at Genesis International's, the target price that has been shared by Elara is pointing out to an 80% upside from the current levels. This was yesterday when Elara Capital initiated coverage on the stock with an 81% upside. The stock already rose yesterday as well, in a sharp uptick. Now, what they are keeping as a target price is 1370. That is something that has pulled up the stock yesterday, but today it's flat with a negative bias. Genesis International, how would you look at this one, Jatin? See, in the case of Genesis, I think that the stock has been consolidating in the range of 810 to 670 since the month of September. So I think there is a strong base building around this 150 point kind of a range. So we believe that once this breakout above 820, 30 odd levels, then we can easily get an upside towards 960. So I've just added the range of the consolidation to the breakout point. So in that case, I think 950, 960 are the immediate targets in the case of Genesis. And I think that should be the potential in the case of in the short term. One should also keep a stop loss of 770 if someone is entering fresh positions at current levels. So 770 is the stop loss and 960, 970 should be the target area. Okay, so Peter, I hope that that advice has been given to you. Now let's go across to the next question. This is from Ankur Modi. He says, "Hi Sakshi, good afternoon. I am from Jaipur. What are your views on GPT Healthcare
and on Unicommerce Solutions. Now, Unicommerce Solutions is a recently listed stock. So, Jatin, I don't know if you will have enough long-term charts to really give a sense on this one. But GPT Healthcare, for that matter, how are you really looking at the charts right now? What are they really indicating? So GPT Healthcare, I think there is recently it has undergone some correction. However, it is still holding on to that level of 160, 155. And what we believe is that there is a scope for the stock to rise towards 195 to 200 odd levels. For that view to play out, 160 should be kept as a stop loss. So if someone wants to build a long position, then he can definitely do it with a stop loss of 160, and on the upside target, expected target is 195 to 200. Okay, got that. So I hope this has answered your question. Next, Venkat from Hyderabad writes in. He says, good afternoon, Sakshi. I want to know fresh levels for an entry in IEX and in Exide for next 2 to 3 years. Now, Exide is from the battery space, we know, and IEX is an exchange, the power exchange right there. It's been a very, very volatile set of a year for IEX as well. It was on an upward trend, a sharp up move, multi-bagger returns kind of move story that emerged. And then in the recent correction, we've actually seen a long time frame correction and consolidation also play out for IEX. Similarly, Exide and Amara Raja did move up pretty much a lot during the elections time, and after that there has been a consolidation here as well. How would you look at these two stocks? See, in the case of IEX, I believe that the trend is on the downside, or the trend is Okay. negative as of now. The trend can only reverse only above 178 odd level. So I think if someone wants to build a trading position, then he can currently buy for a target of 178, and I suggest a stop loss of 160. 161 in the case of IEX. If someone is holding, then 178 levels he should exit, as the overall trend still remains on the negative side. Okay, got it. So I hope this has answered your question. Let's actually go ahead and take the next question. This is from our WhatsApp number that we've got. In fact, there's a message coming in from Kuala Lumpur. Dr. Setu Murugan is writing in. Dr. Murugan, warm welcome to you on Business Today Television. Glad to see that you are watching our shows even in Kuala Lumpur. Yes, we'll try and help you out with your question right there. I'll just read it out to our guest. So Dr. Murugan wants to know on Reliance Power, Jatin, what is the future? Is this a stock that one should be really looking at? Well, yes, Mr. Murugan, this is a year when we've actually seen Reliance Power also come back after a long haul. There was promise being shown and displayed that perhaps financially the company is on a better footing. They are becoming debt free, and all of that had led to a strong surge even on Reliance Power. But do things remain clear for the long term? Does it become, a growth oriented story? Is it a stock that you should be really looking at, because the price point still be looking attractive at around 34, 35 odd levels? Jatin, your sense, Reliance Power, should one look at it or avoid? See, in the case of Reliance Power, it's purely a trading call, not an investment perspective recommendation. I think the 29 rupees is a strong support in the case of Reliance Power, and on the upside, there can be a rally towards 48, 48.50 to 52 odd levels. So that is the levels with which we are working. These are very strict levels that one needs to follow, because the exit is a little painful in the case, or in case of such stocks. So if someone is buying at current levels, then 29 should be kept as a very strict stop loss, and on the upside, if we get a rally towards 52, then that should be used as a profit booking opportunity. Okay, got that. So that's the view that's coming in. Let's take the next question now. This is from Jay Rami Reddy. He says, dear ma'am, thank you so much for your valuable show. I am from Hyderabad and I watch it regularly. Thank you so much for writing in, Mr. Reddy, and I'm glad that this show is able to really help you out in your investment journey. So he has a question and on Gujarat Tool Room,
and he's holding about 3,500 shares at 38 odd levels. Let's actually pull up the stock right there to see where the stock is really trading at. Okay, Gujarat tool room. Let's quickly look at this stock. Okay, right now the stock is trading at 13.9 levels. It's a 5% uptake in a stock like this. It's a very illiquid counter. Let me tell all our viewers, its 52-week range has been towards 45, 46 odd levels from about 10 odd levels. It's towards the lower end of the range where the stock is now trading at, and the purchase price on this one for Mr. Reddy is somewhere around 38. So he is sitting on a lot of losses right there. The volumes are very low on this one. How would you really look at this stock, Gujarat Tool Room? It's in a plastic products category, the company, and we do know that mutual funds have also been decreasing their shareholding over the last few quarters right there. Any sense that you could suggest technically on this one, Jatin? I request to give the script name because I am unable to find it. Okay, got that. I'm sorry, Jaya, our guest is unable to really track this stock. We'll try and address it with some other guest. Meanwhile, we'll go at some other question. We have Avinash writing in. He says, hello, Sakshi, please suggest whether I can buy Ola at the current levels. I would like to spread my total investment into 3 price points for Ola. So what would you advise going forward from here? Again, Jatin, a recently listed stock, but the stock has also slipped below its IPO price as well. And that's where the concerns are emerging. For someone who may be looking at Ola Electric from the absolute long-term perspective, today seems to be a good day because it's up about 7% at 74 odd levels. Does it look like the stock will be now bouncing back for good? Could one entry, take an entry at this point? See, the medium term trend changes only above 85 to 86 odd level. So, if someone wants to, buy in for a long term perspective, then I suggest that wait for a confirmation above 86 odd levels and then you can buy with a stop loss of 70. So, I know these levels are a little far from current market price, but considering that if he wants to buy from long term perspective, then I advise to wait for some confirmations rather than buying only with a 7% up move today. So that is not a deciding factor for me. The deciding factor would be a change in the trend that is only above 86 levels. Got it. Let's actually thank you, Jatin, on that note for being with us and sharing all these thoughts and ideas with all our viewers, answering their questions as well. And we will have you back soon on Business Today. We are now joined by another guest, viewers. We have Kunal B. Parar, Vice President Technical Research at Choice Equity Broking, now with us on the show. Let's actually start taking some of the questions with him. Good afternoon to you, Kunal, and good to have you with us. Without wasting much time, there are a lot of questions, so we'll straight away dive into the drill. We have Vinod Chaudhary writing in. He says, thanks ma'am for doing this for us retail investors. Thanks a lot, Vinod, for writing in. He says, I need information on one stock which is a rarely tracked stock, Shivalik Bimetals, on whether it is a fundamentally good stock and whether I should take an entry. He's already invested also in this stock. This is Shivalik Bimetals, and about 500 odd levels is where he got about 50 stocks right there. Have you ever tracked this one, Kunal? Is this a good stock right now to hold? Well, if we talk about this Shivalik Bimetal, I think stock is trading at 552 level. Stock has a strong support somewhere around 530, and even before stock took the support of the same 530 level and went up to the level of 730. So yes, this is the perfect level where one can go for creating a long position with strict castle of 530. First target that we can witness is a 615, and further upward momentum would be there up to the level of 690. So 530 is the strict castle for the counters. Okay. Hope this has answered your question. We have a next caller with us from Jharkhand in Diogar. We have Sandeep Thakur joining in on the phone line. Sandeep ji, namaskar. कैसे हैं आप? नमस्ते मैम जी पूछिए. कैस्ट्रॉल इंडिया 200 के प्राइस पे 500 शेयर बाय किए हैं. ठीक शॉर्ट है. टर्म के लिए रख सकते हैं या लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं इस स्टॉक को?
चलिए आपको राय दिलवाते हैं। कैस्ट्रॉल के ऊपर क्या राय रहेगी कुणाल? 200 के भाव पर खरीदा हुआ है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर राय रख रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म के नजरिए से ज्यादा बेहतर रहेगा या लॉन्ग टर्म के नजरिए से। खरीदा हुआ है 200 पर, अभी 195 पर है। मैं ये स्टॉक पे दोनों राय दूंगा, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। सबसे पहले लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात कर लेते हैं। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली काफी अच्छा है, एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके चलिए। एंड जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, 200 पे आपने खरीदा है, 195 यानी 5 रुपए का ही लॉस है, दिक्कत नहीं है। आप प्रेजेंट लेवल पे इसमें एवरेज करके चल सकते हो। 5 रुपए में एवरेज करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टॉक में काफी अच्छा सपोर्ट है 185 180 के अराउंड, यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस लग रहे हैं। आप प्रेजेंट लेवल पे वापस पोजीशन बना सकते हो विद स्ट्रिक्ट एस्ट्रो 180। ऊपर के लेवल की बात करते हैं, 220 पहला टारगेट है, 220 जैसे ही ब्रेक होगा 244 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में ये काउंटर बता सकता है। ओके, गॉट इट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल आया है ये नमिता अरोरा का है। ये कह रही है, हाय साक्षी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम वेरी वेल नमिता, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड आई होप द सेम फॉर यू एज वेल। शी हैज़ अ फ्यू शेयर्स ऑफ Pidilite, Kunal. Now she wants to know if she can accumulate at the current levels or no. What would you advise? Well, Pidilite is a very good company if we talk about fundamentals. Not only this, on a chart level, it also looks very attractive because stock has taken the support of 2900, and this is the level by which stock took the same took the same support, and after which it made high of somewhere around 3415. So even on daily and weekly charts, stock is looking very attractive. Yes, this is the level where one can go for creating a long position. ओके, लॉन्ग पोजीशन के लिए आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। राय आपको मिल गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल आया है कमलेश नरखेड़े का। ये 2 स्टॉक्स के ऊपर आपसे पूछना चाह रहे हैं कुणाल। पहला है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अगेन मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और ये खास तौर पर इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह के लिए पार्ट सप्लाई करती है कंपनी। तो ईवी रिलेटेड थीम में डेफिनेटली इस कंपनी ने काफ़ी अपने आप को प्रूव किया है इस साल में, साल 2024 में। और दूसरा जो स्टॉक है इनका है JSW एनर्जी। अब दोनों में लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाय करना चाहते हैं, कहाँ पर निवेश की सलाह रहेगी? सबसे पहले ओलेक्ट्रा की बात कर लेते हैं। 1560 के अराउंड है। आप प्रेजेंट लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है कंपनी का। अगर मैं टेक्निकल बेस के लेवल की बात करूँ तो 1780 और 1780 जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 2200 तक के लेवल ओलेक्ट्रा ग्रीन में देखने को मिल सकते हैं। JSW एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट नाउ JSW एनर्जी इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 666। स्टॉक अभी एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में है। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 640, आप यहाँ पे भी पोजीशन बना के चल सकते हो। इमीडिएट बेसिस पे आपको 775 और उसके ऊपर आपको 800 तक के भी लेवल JSW एनर्जी बता सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल गई है। अगला सवाल भी ले लेते हैं और ये सवाल हमारे पास आया है विनीता गुप्ता का। ये फ्रेश एंट्री ढूंढ रही हैं ई पैक ड्यूरेबल में और कीरी इंडस्ट्रीज में। अब कीरी इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी हाल फिलहाल में चढ़ भी चुका है ज़बरदस्त रैली के साथ। कीरी इंडस्ट्रीज और ई पैक ड्यूरेबल दोनों में से आपको कहाँ पर कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी भी खरीदारी करने के लिए? कीरी की बात करें तो वन वे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल चुकी है। 585 के अराउंड है स्टॉक। 400 से लेके 585 तक की जर्नी एक शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने दिखाई है। तो फिलहाल कीरी को मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बट इफ यू टॉक अबाउट ई पैक, राइट नाउ ई पैक इज ट्रेडिंग एट 387। अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल 360, एक परफेक्ट बाइंग लेवल वहां पे बनेगा विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 350। ऊपर के लेवल की बात करते हैं 435 के बाद 510 तक के लेवल ई पैक हमें दिखा सकता है। ओके, गॉट दैट। चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल गई है। नेक्स्ट हम पूछ लेते हैं आपसे सवाल। कुछ अदानी समूह के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर सवाल आ रहे हैं तो मैं एक साथ क्लब कर लेती हूँ उनको। कुणाल, पहले अवधीश ठाकुर पूछ रहे हैं अदानी ग्रीन में फ्रेश एंट्री के लिए। विकास आहूजा पूछ रहे हैं अदानी पावर खरीदा हुआ है 350 के आसपास, तो होल्ड करें या सेल करें? ओवरऑल अदानी समूह में हाल फिलहाल की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको देखते हुए आपको क्या लगता है, कहाँ पर बने रहें जिनके पास पोजीशंस हैं? क्या ये खरीदारी का मौका है या नहीं, या फिर कंप्लीटली अवॉइड करने की सलाह रहेगी?
पर्टिकुलरली ये स्टॉक पिछले 2-3 सालों से काफी लाइमलाइट में रहा है, वेदर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और वेदर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव। फिलहाल के लिए मैं इसको अवॉइड करके चलने की ही सलाह दूंगा, जब तक इसके ऊपर फर्दर क्लियरिटी नहीं आती है तब तक। ओके, गॉट इट। तो चलिए, आपको यहाँ पर अदानी समूह पर राय मिल गई है। हमारे पास एक कॉलर जुड़े हुए हैं आप फ़ोन पर। अंकुश हैं इंदौर से। नमस्कार अंकुश, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम। मैम मुझे क्वेश्चन था, मेरे पास 1000 शेयर्स ऑफ आइनॉक्स ग्रीन है। ठीक है। रेट 190। ठीक है। तो अभी तो वो गिर गया, लेकिन मतलब इसको होल्ड करना चाहिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ? लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि हम लंबी अवधि के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपने खरीदा हुआ है 190 पर, अभी 144 पर ऑलरेडी आ चुका है। तो अब क्या होल्ड करे रहने से बेनिफिट होगा? कुछ रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं कुणाल, या फिर स्विच करने की सलाह होगी यहाँ? स्विच करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। 144 पे अराउंड है, स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट है, समझ अराउंड 126 और 144 पे है। मैं कहूंगा इसको आप होल्ड करके चलिए, अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 130 आप वहां पे एवरेज करके चलिए। स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 120, यहाँ से आपको वापस एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिस बाउंस बैक में स्टॉक आपको 200 से लेकर 220 तक के लेवल वापस दिखा सकता है। चलिए, यहाँ पर भी आपको अब राय मिल गई है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी पोजीशंस को लेकर। अर्चना साहू का हमारे पास सवाल आया है, यूट्यूब के व्यूअर हैं, पूछ रहे हैं, कैन आई एंटर वरुण बेवरेजेस एट द करंट लेवल्स फॉर द लॉन्ग टर्म और शुड आई वेट? वरुण बेवरेजेस भी एक वेल्थ क्रिएटिंग स्टोरी रही है, मल्टी बैगर स्टोरी रही है, और लगातार पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से यहाँ पर मोमेंटम जनरेट भी हुआ है। कुणाल, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों के लिहाज से कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? क्या अभी भी तेजी के बाद भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह बनती है? 617। वेल डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हो। 617 के अराउंड है, आप 560 के क्लोजिंग बेसिस के साथ यहाँ पे पोजीशन बना के चलिए। 675 जैसे ही ब्रेक होगा 725 तक के लेवल आपको वीबीएल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल आया है ये है योगदीप गुरुंग का, और ये कैनरा बैंक के ऊपर सवाल है इनका कुणाल, और ये पूछना चाह रहे हैं, ऑलरेडी खरीदा हुआ है 115 के लेवल्स पर कैनरा बैंक। अब पूछ रहे हैं, शुड आई सेल ऑन राइज और कंटिन्यू टू होल्ड? आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद लॉन्ग टर्म, सो कैन यू प्लीज असिस्ट ऑन दिस वन? वेल, गुड क्वेश्चन राइट देयर। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, ये भी अच्छी बात है। जो आपने खरीदा है 115 पर खरीदा है, फिलहाल 102 पर है, यानी कि आपकी खरीदारी से थोड़ा नीचे जरूर आया है। ओवरऑल क्या एवरेज की सलाह यहाँ पर बनेगी कैनरा बैंक पर? क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से बैंकिंग स्पेस में एक मोमेंटम जनरेट हो रहा है डेफिनेटली। वेल डेफिनेटली मैं एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा। 102 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2 बार स्टॉक में 92 के अराउंड का सपोर्ट भी लिया हुआ है। 92 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। लेवल की बात कर लेते हैं, 114 पहला लेवल, पहला टारगेट होगा। जैसे 114 ब्रेक होगा, वन वे हमें 128 तक की भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चले विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 92। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी राय आपने नोट डाउन कर ली होगी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आया है सूर्य का, और ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून साक्षी, आई एम लुकिंग टू बाय आदित्य बिरला रियल एस्टेट शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, so could you please also suggest a trade target and a stop loss as well? आदित्य बिरला रियल एस्टेट का शेयर जो है 2600 के लेवल्स पर अभी चल रहा है। पिछले एक महीने में तो 5% तक के आसपास ये गिरा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से फ्लैटिश विद अ पॉजिटिव बायस 2.5% तक के आसपास का मूव है। ईयर टू डेट और 1 ईयर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी म्यूटेड रही है, कुछ ज़्यादा ना मूव हुआ है, साइडवेज मोमेंटम में ही ये स्टॉक रहा है। अभी क्या ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कहीं साइंस नजर आते हैं आदित्य बिरला रियल एस्टेट के शेयर में? टाइमिंग के लिए मैं उसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। पिछले 2 हफ्ते से स्टॉक ऊपर में 2700, लोअर लेवल पे 2500 इसी रेंज में घूम रहा है, और जब तक आइदर साइड का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हमें कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल पता नहीं चलेगा। फिलहाल के लिए अवॉइड करिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी आपको राय मिल गई है। नेक्स्ट लेते हैं अभिषेक झा का सवाल, ये जेएन के बैंक पर पूछ रहे हैं, 112 पर खरीदा है, शॉर्ट टर्म का व्यू क्या रहना चाहिए इनके लिए, क्या सलाह देना चाहेंगे? वेल जेएन के बैंक जो फिलहाल अभी 97 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 91 के एसएल के साथ। अगर ऑलरेडी खरीदारी है तो दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे उसको होल्ड करके चल सकते हो 91 के एसएल के साथ। पहला टारगेट 108 है, और वो जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर में आपको 118 का भी टारगेट ये स्टॉक आपको दिखा सकता है।
Got it. Let's take the next question. This is on our WhatsApp number that we've got from Bengaluru. Srinath has sent a question and he says, I would like to know the time frame within which Prism Johnson share prices could cross 250 odd levels. It appears to be stuck in the 180 range for last 2 weeks. It's not been moving much. What would your suggestion be on Prism Johnson? Can it cross beyond 250 odd levels in the near term? Well, definitely we can see good upside momentum in the counter, but I'm not seeing any level up to the 250. No doubt, stock has been trading in a range bound momentum only, but positive equation is that the stock has been trading above its 200 days moving average. So yes, definitely we can see some upside momentum, but up to the level of 200 to 230 only. ओके गॉट दैट। चलिए यहाँ पर भी राय आपको मिल गई है, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट हार्दिक पटेल हमें लिखते हैं, आई नीड अ फ्रेश एंट्री इन गेल, और कौन से लेवल पर खरीदें और क्या स्टॉप लॉस रखें, ये भी आप सजेस्ट कर दीजिए। गेल में ऑयल एंड गैस स्पेस से गैस अथॉरिटी, हाल फिलहाल में यहाँ पर रेगुलेटरी चेंजेस होने की वजह से काफ़ी डाउनटर्न भी नज़र आया था पूरे ही गैस रिलेटेड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स में। आज भी ये 1.7% लोअर है 195 पर। फिलहाल आपको ये स्टॉक कैसा नज़र आ रहा है? वेल, स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, 195 के अराउंड है। आप 180 के एसएल के साथ पोजीशन बना के चल सकते हो। पहला टारगेट यहाँ पे 215 का होगा। जैसे ही 215 ब्रेक होगा, 235 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, आई होप हार्दिक आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अश्वनी बालाजी लिखते हैं, हाय गुड आफ्टरनून, आई हैव एडेड वन चंक ऑफ मनी एज अ लमसम ऑन थर्सडे, सिटिंग विद कैश नाउ, कैन आई इन्वेस्ट अनदर चंक टुडे और शैल आई वेट फॉर फर्दर करेक्शन टू हैपन? वेल अश्विन, आई विल डेफिनेटली गेट योर व्यू. I would have loved to understand where exactly have you put in this lump sum money. Is it via an index fund that you're putting in? Where exactly are you putting in this money? Is it with certain large cap companies? Is it with the Nifty? For our guests to be able to guide you better, Kunal, how would you advise for somebody who's been sitting on cash wanting to invest lump sum funds of money in the markets? Well, this is the perfect time where one can, get into the markets with long-term perspective. But I'm not suggesting to go for lump sum investment at the present level. I think I would say go 20 to 30% of your investment at present level. If you are having 100 rupees, then deploy 20 to 30 rupees at the present level. Many stocks are there which are trading with strong support and that too with large cap stocks. So yeah, this is the perfect time where you can deploy your 20 to 30% of your corpus. Okay, got that. So that's the view that's coming in. I hope this has answered your question. We have a caller with us now from Mumbai. Kalpesh Patel is with us on the phone line. Kalpesh जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? कुणाल भाई मैं कैसे ठीक हो? मजा में कल्पेश भाई। मैं कुणाल भाई, मैंने लॉरेंस लैब का फ्यूचर बाय किया हुआ है दिसंबर का 530 में। मेरा टारगेट है 620 रुपया। तो और ये यूनाइटेड स्पिरिट, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा देगा, दवा या दारू? ओह, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि आपके लिए, और ये आपके लगातार फैन भी है क्योंकि जब भी आप आते हैं ये सवाल ज़रूर पूछते हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे इनको आप? वेल, सबसे पहले लॉरेंस लैब की बात कर लेते हैं। 534 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक्सपायरी में महज 2 दिन ही बाकी है। 620 आने का चांसेस कम है, बट यस वी कैन से ऊपर में 545 548 तक आ सकता है। एंड इफ यू हैव अ गट्स फीलिंग ऑन दिस काउंटर, यू कैन गो फॉर रोल ओवर, बट टेक्निकली भी 620 का लेवल लग रहा है, बट आपको यहाँ पे रोल ओवर करके जाना ही पड़ेगा। एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर लेते हैं। राइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स इज ट्रेडिंग एट समवेयर ऑफ 1570 कल्पेश भाई। તમે આમાં પણ પોઝિશન બનાવીને ચાલી શકો છો। રિવર્સલ આજના દિવસમાં જોવા મળી રહ્યું છે। આજે આ લેવલ પર જો ક્લોઝિંગ આવે તો તમે પોઝિશન કેરી કરો। કેશ પર તમને 1565 અને 1565 પછી 1600 સુધીના લેવલ જોવા મળી શકે છે। ओके तो चलिए, गुजराती में भी आपको स्पेसिफिक राय यहाँ पर कुणाल जी लगातार देते हैं। तो अब हमारा ये डेली कॉल्स जो शो है ये एक मल्टीलिंगुअल शो हो चुका है, जहाँ हिंदी, इंग्लिश और साथ साथ गुजराती का भी फ्लेवर आपको देखने को मिलता है। आप जहाँ से भी हैं अपनी लैंग्वेज में सवाल भेजें, और उम्मीद करते हैं हमारे गेस्ट्स आपको उस लैंग्वेज में भी आपको राय दे पाएंगे। अगला सवाल लेते हैं, ये कोलकाता से मोमिता पूछ रही हैं, हाय साक्षी, व्हाट आर 3 गुड स्टॉक्स वेयर आई कैन डिप्लॉय 5 लाख रुपीज़ विच कैन आउट
outperform in the market. So again, big sums of money being to be invested. People sitting on cash now are looking for opportunities. आपने कोई 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं कुणाल, जहां पर अगर लमसम पैसा लगा दिया जाए तो अगले 2-3-4 साल में बढ़िया प्रॉफिट्स मिल सकते हैं? 3 stocks are there on which I have been like keeping an eye. First is Geo Finance right now, which is trading at 324. ठीक है. And second is Tata Techno. Tata Techno is trading at 943. And third one is Bajaj Housing. It is trading somewhere around 130, 120. So these 3 stocks are there where I have a upside momentum. And we can see a very good upside momentum. So if you have a long-term view and you want to put your money lump sum at present level in these stocks, you can go for it. ओके, अगर आपको लमसम पैसा लगाना है, 3 बढ़िया स्टॉक्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कुणाल ने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं. जियो फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज और तीसरा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस. तो ये इन 3 स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं. ये तीनों ही बड़ी कंग्लोमरेट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं. जियो फाइनेंस डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई कंपनी है. टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा समूह का लेटेस्ट जो IPO आया था इसी साल में, वो कंपनी है. और इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है जो कि बजाज समूह में से निकली हुई कंपनी, और 30 वर्ष बाद बजाज हाउसिंग का कोई एक IPO आया है. तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से करंटली अगर आपको अट्रैक्टिव लेवल्स में निवेश करना है तो ये 3 स्टॉक्स आप डेफिनेटली लेकर चल सकते हैं. अगला सवाल हमारे पास एक बार फिर से सागर मैंगलोर का अदानी समूह के एक स्टॉक के ऊपर. अदानी पावर खरीदा हुआ है 450 पर, होल्ड करें या नहीं, ये पूछना चाहते हैं. Well, 550 के अराउंड खरीदारी है एंड 450. ओके 450. मतलब 450 के अराउंड की खरीदारी है एंड अभी स्टॉक चल रहा है तकरीबन 437. आई वुड से कि आप फिलहाल के लिए यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अगर स्टॉक लोअर लेवल पे 430 के नीचे का क्लोजिंग देता है तो गिरावट में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 380 तक भी आ सकता है और हाई वॉलेटाइल हो चुका है बिकॉज ऑफ रिसेंट न्यूज. तो अगर 430 का एक बार ऐसे मेंटेन करके चलिए, अगर वो ब्रेक हो जाए तो प्लीज आप यहाँ से निकल जाइए. चलिए, यहाँ पर भी आपको एग्जिट करने की ही सलाह दी जा रही है क्योंकि क्लैरिटी अभी नहीं है और बेहतर है कि अभी आप थोड़े से लॉस में हैं, यहाँ से एग्जिट करें और बेहतर स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं. स्वाति पूछ रही हैं बर्जर पेंट्स के बारे में, 530 के लेवल पर खरीदा हुआ है, यहाँ पर क्या सलाह देना चाहेंगे उनको बर्जर पेंट्स? राइट नाउ बजट पे इज ट्रेडिंग 486. आप अपनी जो पोजीशंस को होल्ड करके चलिए. नए खरीदने, अगर आपको नया खरीदना है नया आप भी खरीद सकते हैं विद स्ट्रिक्ट एक्सेल ऑफ 460. पहला टारगेट है 540. 540 जैसे ही ब्रेक होगा 590 तक के लेवल आपको टारगेट में ये स्टॉक दिखा सकता है. ठीक है, एक आखिरी सवाल लेंगे शो पर. तेजपाल भाटिया का सवाल है, लॉन्ग टर्म व्यू आपसे जानना चाह रहे हैं 2 स्टॉक्स पर. पहला तो प्राज इंडस्ट्रीज जिसे एक प्रॉक्सी प्ले माना जाता है शुगर इंडस्ट्री में, और दूसरा है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस जो कि एक IT सेक्टर की कंपनी है. शुगर स्पेस से रिलेटेड कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज और IT क्षेत्र से रिलेटेड कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस. लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों स्टॉक सही है. दोनों एक प्राइमरी ट्रेंड अपर ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं. FSL 364 के अराउंड है. लाइकली चांसेस है 440 से लेके 480 तक के लेवल FSL आपको दिखा सकता है. प्राज इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है. 2-3 दिन में अच्छे खासे मोमेंटम भी स्टॉक ने पकड़ी हुई है. पॉसिबिलिटी से ये स्टॉक 950 से लेके 1020 तक के लेवल दिखा सकता है. तो प्राज और FSL दोनों लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छे लग रहे हैं. ओके गॉट इट कुणाल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम क्वेरीज हमारे सभी दर्शकों की एड्रेस करने के लिए. ऑलवेज गुड टू स्पीक टू यू एंड हैव यू स्पीक टू आवर टॉप व्यूअर्स हु जॉइन इन ऑन एन एवरीडे बेसिस एज वेल. थैंक यू so much. And viewers, now time to wind up this edition. 60 points lower on the Nifty right now, so we have swiftly moved to the low point of the day. Let's see where it goes. We still have about 2.5 hours remaining for the day. Will we see a bounce back return, or will this stall the 2 days of a rally that we've seen on the day street? It's something that we will focus on. Stay with us on Business Today television to find out what should your investment strategy be in the current markets. So your government has always tried to convey the perception that it is careful about fiscal deficits, it's careful about government spending, and there should be no profligate spending. Now my concern is when the Ladki Behan Yojana in Maharashtra plays the kind of role it did in helping you win, and in Jharkhand the Mayam Yojana plays the role that it did,
then this kind of becomes the default for all state governments. And with such a large percentage of state finances being used for this kind of a welfare scheme, which is essentially a direct benefit transfer, it takes money away from infrastructure, public works, development, and will now become the default everywhere. Don't I remember you, Rahul, asking me questions before the Lok Sabha election, all full of praise and quoting Harvard professors and whatnot about supporting the less privileged sections of society with direct benefit transfers in a bigger way. You were a big advocate of that. What happened? No, I'm just asking. My job is always just to ask the question. Okay. Now, my concern is. So, do you have any conviction?